So next group archaeobacteria. Archaeobacteria, which is the most primitive form of prokaryotes. It is most primitive prokaryotes. Okay, and what is the specialty about is that absence of peptidoglycan in their wall. इनकी वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट रहता है. In their wall, and in place of peptidoglycan what are found? Protein and non-cellulosic polysaccharides, and they live under extremely hostile condition. Okay, live under hostile condition here means extremely high temperature, salinity is very high, so it is known as the hostile conditions. Okay, and they are of three types. What are three types? First is methanogens, halophiles, thermoacetophiles. Methanogens, name suggests produce methanes. Halophiles, found in, why halophiles? They usually found in high quantity of soil, where salt is present in high salt. Thermoacetophiles, or you can say thermo word is coming, high temperature. So first we will discuss methanogens. So what do you mean by methanogens? They are strict anaerobes. First points, they are aerobic or anaerobic? Strictly anaerobes. What else? Autotrophs. Third condition, they occur in marshy areas. They occur in marshy areas where they convert, मतलब मार्शी एरिया में पाए जाते हैं और वहाँ वो फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में. ओके, occur in marshy areas where
this is very important point, where they convert formic acid and CO2 into methane. Okay, that's why methanogens name come. Remember this point. And one more important point, they live as symbionts. Symbiotic association means पता है where both species are benefit. दो तरह के टू डिफरेंट स्पीशीज़ एक साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है. ओके, लिव एज symbiotes inside rumen of stomach of herbivores. Okay, and they are helpful to the ruminants in fermentation of cellulose. This is also very important point. Helps in the fermentation of cellulose. Actually herbivores क्या होते हैं, they eat grass, उसमें cellulose का content ज़्यादा होता है, so they helps in the fermentation of cellulose. Okay, now next is about halophiles. Halophiles, why they are named? They occur in salt rich area. Occur in salt rich area. What else? Only this much. इतना ही याद रखो, इतना ही तुम लोग का NCERT में दिया है. They are aerobic chemoheterotrophs. Aerobic Aerobic means in the presence of oxygen. Chemo means chemical. Heterotrophs dependent on other. Okay. Next is thermoacidophiles. What do you mean by thermoacidophiles? They tolerate high temperature, thermo is coming, and acid is coming, as well as high acidity. So, ability to tolerate high temperature and high acidity. So this is all about archaeobacteria. Okay, and archaeobacteria का और क्या यूज़ होता है? Production of gobar gas from dung, and this is very important point. Fermentation of cellulose. So next we will discuss, next group is mycoplasma. Which is also known as PPLO. PPLO means here pleuropneumonia-like organism. Let me write. Okay, first very important point I would like to tell. It is the simplest and smallest of the free living prokaryotes.
ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। simplest and smallest of free living prokaryotes. And what you mean by PPLO means, let me write. PPLO means pleuropneumonia like organism. Smallest, okay. And very important, third point, cell wall is absent. So because cell wall is absent, they can change their shape. Change their so cell wall is absent. This is the reason why they change their shape, and they are also known as pleuromorphic. This is the reason why they are known as pleomorphic. Okay, and remaining is that the genetic material क्या होते हैं, single DNA which is naked DNA, 70S ribosomes, and they are heterotrophic in their nutrition. Let me write. Heterotrophic, and they mostly produce pleuropneumonia in domestic animals. Okay. और सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था ये जो माइकोप्लाज्मा, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोन्यूमोनिया. ओके, एंड देयर साइज रेंजेस फ्रॉम size 0.1 to 0.5. It is 5. Okay, and heterotrophs much is okay, mostly produce in pneumonia in domestic animals. So it is all about. Next we will discuss cyanobacteria. Okay, let me discuss cyanobacteria also. Cyanobacteria, or you can say blue-green algae. What is the specialty about this? They help in the fixation of nitrogen. Nitrogen fixation में ये help करते हैं. Example Nostoc annabina. Nostoc annabina इसमें आते हैं, और उन लोग में एक स्पेशल फीचर्स पाया जाता है जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो मेनली साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक एनाबिना और हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं. ओके, एंड वन मोर, दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजेनिक, they perform oxygenic photosynthesis and occur, if you talk about occurrence, all types of environment.
sea water, marshes, moist rock. Okay. And morphology, if we talk about morphology, unicellular, colonial, filamentous, unicellular, colonial, कॉलोनी मीन्स कॉलोनी फॉर्म में, ठीक है. और एंड फिलामेंटस मीन्स फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज फिलामेंट. ओके, ये फिलामेंट और ये है कॉलोनी में रह रहे हैं. ओके, सो एंड very important point, have ability of nitrogen fixation. ठीक है. The filamentous forms, this line is very important. हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं. स्पेशल लार्ज पेल सेल्स और हेट्रोसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो क्या कहते हैं, लोग में नाइट्रोजन फिक्स करने के एबिलिटी होते हैं और लोग में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के? नॉस्टॉक. एटलीस्ट लर्न दिस टू एग्जाम्पल. एनाबेना. ओके. अब हेट्रोसिस्ट का हम स्ट्रक्चर, आई विल टेल द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसिस्ट. होता क्या है? लेट मी टेक एनाबिना. It is filamentous form. Okay. सो दिस इज, ये जो साइट में है, दिस इज म्यूसिलेज. and this is heterocyst. So this is filamentous form. लिख लो, ये एनाबिना है. So this is all about the blue green algae.